Good morning students, this is Jyoti here and we are back with our tense video, and today we are going to start the future tense. I think you all have heard about the future tense. The first of all we should know what is future. As we have done the past, present and now the time is to do the future tense. Past means which has been past, like yesterday, day before day, that is past, okay? And present means now, whatever we are doing, we are living in that is present. What about the future? The future which is about to come. Future means that is about to come, such as tomorrow, at night, evening. These are related to our future tense. And now we should do where we use future tense and why do we need to do this. That's so simple. For making sentences which are related to our future. So that time we have to use future tense. Okay. First of all, we should know how many types of future tense. These are 4. How many? 4. We have done it in our Zoom class also. There are 4 types of future tense. The first one is future indefinite. Future indefinite. And the second is future continuous. That is continuous. And the third one is future perfect. And the fourth is future perfect continuous. I think you all know these all. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Where do we use it? Yeah. A future indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, they all have their parts. They all have their sentences. We have divided these into sub-sentences. That is the first, if we talk about, that is positive. Yeah. And if we talk about the second one, that is negative. And the third one is interrogative. And the fourth is interrogative plus negative. If we are going to talk about the indefinite tense, then we should know future indefinite tense has 4 sentences, 4 types of sentences: positive sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative plus negative sentence. Same if we talk about the future continuous tense, we all have the future continuous tense has positive, negative, interrogative and interrogative plus negative. Come to the next one, perfect. Perfect, the same, positive, negative, interrogative and interrogative plus negative. And same with the perfect continuous tense, positive, negative, interrogative and interrogative plus negative. How can we use it now? Yeah, the first of all, you should know which helping verb we use in future tense. That is very important. Yeah, first is like will. And the second is shall. No need to be worried about it. There are 2 verbs which we use for the future tense, will and shall, and these verbs are called helping verbs. These are helping verbs which helps to make and to complete the sentence. जो help करती है for completing our sentence, that is helping verb. How can we use it now? You should know will, shall is we use in a future tense, and these both are our modals also. Okay.
अब लेट्स बिगिन विद द इनडेफिनेट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इसको पढ़ेंगे अब हम. Okay, then we are going to start with our positive sentences with the use of future tense, and we have to use helping verbs here, and those helping verbs are will and shall. Okay, let's start it. The first of all, we need a subject. So what is subject? The doer, yeah, who does the work, and plus we need will and shall plus V1 and plus object. After will and shall verbs, we need only first form of the verb. We cannot use V2, we cannot use V3. If we use it, अगर हम use करते हैं V2 after will or shall, the sentence is incorrect. Okay, incorrect means गलत है वो sentence. We cannot make our sentences with V2 and V3 with helping verbs will and shall. अब how to use these words, कैसे करना है हमें ये. Future tense का मतलब है like आप कुछ करेंगे. आपने मुझे प्रॉमिस किया कि कल से मैं पढ़ूंगी, कल मैं पढ़ूंगी. आपने मम्मी को बोला मैं बोलूंगी, मैं लिखूंगी. वट एवर यू विल डू, जो भी काम आप करेंगे उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, विल एंड शेल. अब विल कहाँ यूज़ करना है एंड शेल कहाँ यूज़ करना है. यू मस्ट बी थिंकिंग कि दोनों को एक ही बार यूज़ करना है, एक ही साथ यूज़ करना है. नो, विल हैज़ इट्स ओन प्लेस एंड शेल हैज़ इट्स ऑन प्लेस. तो दोनों के अपने अलग अलग प्लेसेस हैं. हाउ टू यूज़ इट, विल and shall. Just remember it. Shall we use with I and we. I means मैं, we means हम. That's it. हमें shall का use I और we के साथ करना है, and rest of the subjects we will use will. बाकी जितने भी subjects बच गए उनके साथ हम क्या use करेंगे, will. Now you must be thinking कि ये और कौन से subjects होते हैं, like you, they, he, she and it, and even a name or many names, 2 names, 3 names. How many are these? Okay, we can use it. You will come, they will come, he will come, she will come, it will come. Name, a Raj will come, Raj will come. Many है, Raj and Radha, whatever you want to say. Raj and Radha will come to attend this party. Okay, and shall, where we will use shall, we will use shall with I and we. I means मैं, we means हम. मैं पढ़ूंगा, I shall study. मैं मामा के घर जाऊंगा, I shall go to my maternal uncle's home. Okay, we shall go, हम लोग जाएंगे. If you wanna say कि हमारी पूरी family जाएगी, so that means that becomes we. We shall go outside, we shall go for picnic. Wherever you are going, you can say we. If you are we, अगर हम में बात हो रही है तो use shall. एक मैं में बात हो रही है तो that is shall. And then you, they, he, she, it, and a name and many names we will use will only. मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, मैं खाऊंगा, तुम खाओगे, हम खाएंगे, हम बैठेंगे. Okay, these all the sentences will be made by will and shall. Come to the next one. अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक सेंटेंस आप बोलेंगे कि मैं ही लिखूंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही बोलूंगा, मम्मी ही जाएंगी, मम्मी ही खाना बनाएंगी. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. You can also deny. Deny means you can, आप लोग मना कर सकते हैं उस चीज़ को. ठीक है, आप बोलेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं रात को तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं शाम को तुमसे नहीं मिलूंगा. वे शाम को खेलेंगे नहीं, वे कल फुटबॉल नहीं खेलेंगे. If you wanna make these kind of sentences, so you should use not here. Just remember it. We cannot use not without the helping verb and without the verb. बिना verb के हम sentence में not का use नहीं कर सकते हैं. That will be incorrect. How can we use it now? First of all, we need a subject, and after that we need a helping verb, and then we need not.
With helping verb we have to use not if the sentence is in negative form. Negative form में sentence है then we need not. Negative नहीं तो not तो हमें चाहिए ही है. Plus में whatever we are going to use it now, main verb. We will soon do the main verb and the helping verb. What is the difference between it? We will do it soon, but before that just do the tenses. Subject, helping verb, will, not plus main verb plus object. How can we make the sentence? If you want to say मैं कल नहीं पढ़ूंगा, मैं means I, that is I. Future में the helping verbs are will and shall. So I we use shall, I shall. नहीं means not. I shall not study. मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, लड़ाई हो जाती है भाई से, होती है ना, तो you should say and you can say even कि I shall not talk to you, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. I shall not go with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा. I shall not do anything, we shall not attend the party. Whatever you want to say, so you can use I, we, you, they, he, she, it for making the negative sentences and you have to use not there. मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, हम नहीं बोलेंगे. मम्मी आज खाना नहीं बनाएंगी. Suppose आज मम्मी बाहर खाना खाएंगे तो you can say कि आज मम्मी घर पर खाना नहीं बनाएंगी. मम्मी, my mother, मेरी मम्मी नहीं बनाएंगी. My mother, my mother, can we use shall or we use will? Whatever we are going to use it, will. Because with the names we have to use will. My mother will not cook food for me. My mother will not cook food for me. Come to the next one, that is interrogative. Okay, just tell me, आप आंसर कब देते हैं? जब आपका मन करता है या जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है तब? Of course, जब if someone is asking you a question and he wants to know something, so at that time he is gonna ask you a question. So at that time you are giving the answer. So answer हम तब देंगे when we have a question. Yeah. If you have your unit test आपके पास हैं, so कब आप आंसर देंगे? When you get your test. Okay. So अब सेम यही हमें अभी इनके आंसर्स के लिए, these are answers. Okay. मैं आपसे पूछूंगी, अरे क्या तू वहाँ जाएगा? क्या तू लिखेगा? अरे क्या तुम पढ़ोगी? क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाए? तो these are questions. आप मुझे आंसर देंगे, हाँ हाँ मैं जाऊँगा. अरे मैं तो नहीं जाऊँगा. मेरी मम्मी जाएंगी, मैं तो नहीं जाऊँगा. मेरे पापा जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे. ओके, तो यू कैन से इट, बट बिफोर दैट वी नीड अ क्वेश्चन. क्वेश्चन, फॉर आस्किंग द क्वेश्चन वी मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. हाउ कैन वी मेक इट? फॉर मेकिंग द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मीन्स जो विल एंड शैल है, दैट विल बी बिफोर द सब्जेक्ट. वो कहाँ आएगा? बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जिससे हम पूछना चाह रहे हैं. ठीक है? विल, यू, शैल, आई, इस तरह से. एंड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. And you all know and you all are aware we need a question mark for making a sentence, for asking a question. If I wanna ask you, अगर मैं आपसे question put करूँ तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? अरे क्या तू वहाँ जाएगा? Will you go there? Yes, shall you go there? Can you give me the answer? Of course, will. अरे मैम ने तो will बताया था, because shall we use with I or we. मैम ने बोला क्या तू वहाँ जाएगा? So will you go there? मैं तो नहीं जाऊँगा. I will not go there. Will or shall? I will not or I shall not. Of course, I shall not go there. मैं तो जाऊँगा. I shall go there. मैं आज, क्या तू आज चाय बनाएगा? क्या तू मेरे लिए चाय बनाएगा? क्या तू अपने लिए चाय बनाएगा? Will you make tea for me? Will you make tea for me? Will you make tea for you? इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं. अरे मैं बनाऊँगा. I shall make tea for you. मैं तो नहीं बनाऊँगा. I shall not make a tea for you.
Okay, so interrogative में you have to ask the question in negative form. You are denying for that thing. मना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए. in positive, yes, you are agree. आप जाएंगे, you are promising me, आप कल जाएंगे, आप बोलेंगे, आप कल से पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, whatever you will do. Okay, कल से आप जो भी करेंगे, जो भी करूँगा, उसके लिए हम पॉजिटिव, नहीं करेंगे तो नेगेटिव, और क्या करेंगे तो इंटेरोगेटिव. कम टू द नेक्स्ट. ओके, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट का, फ्यूचर indefinite. First of all, we have started doing the indefinite. Indefinite, we have done the positive, negative, interrogative. What is left now? Interrogative plus negative. Simple. Interrogative plus negative. What do we need now? For making the sentence interrogative, देखेंगे interrogative के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? will, shall की ज़रूरत है. ओके, प्लस और किसकी ज़रूरत है? सब्जेक्ट की ज़रूरत है. प्लस अब ये सेंटेंस इज आस्किंग टू यूज नेगेटिव एंड नॉट. नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ऑफकोर्स हमें क्या यूज़ करना है? नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. मैं आपसे पूछूं, अरे क्या तू नहीं जाएगा? क्या तू नहीं जाएगा? क्या तू आज खाना नहीं बनाएगा? क्या तुम्हारी मम्मी आज खाना नहीं बनाएगी? क्या उसकी मम्मी आज उसे डांटेंगी? तो इस तरह से अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, क्या और नहीं, क्या उसकी मम्मी उसे आज नहीं डांटेंगी? क्या तुम्हारी मम्मी आज खाना नहीं बनाएगी? क्या मेरी मम्मी खाना नहीं बनाएगी? क्या मेरे फादर मुझसे बात नहीं करेंगे? क्या भी आ गया और नोट भी आ गया. सो फॉर दैट वी नीड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. विल यू नॉट go there? Will your mother not cook food today? क्या तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बनाएंगी? Will your mother not cook food today? आज क्या तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बनाएंगी? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी नहीं? Will your mother not scold you? डांटना means scold. Will your mother not scold you? क्या मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगी नहीं? Shall I not or will I not? What should I use it? Shall. Shall I not teach you today? क्या मैं आज तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी? तो shall I not teach you today? I hope these all are clear to you. The rules are very simple. You just need to use these all the sentences in your regular basis. Subject, positive की बात करें, then subject will shall plus V1. No need, just object. And then negative, subject helping verb plus not plus main verb plus object, and the interrogative will shall plus subject plus V1 plus object, and interrogative plus negative will shall plus subject plus not plus V1 plus object. You won't understand, you won't speak, and you won't learn even until you speak. Okay, जब तक आप बोलेंगे नहीं और जब तक आप इसे सीखेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे और आपको लर्न भी नहीं होंगे. ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस मोर एंड ट्राई टू टॉक टू विद योर मदर, योर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके.